ग्रेट। ठीक है शिवम, तुमसे स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, कहाँ गए शिवम? अभी तो यहीं पे था। यस, शिवम हाँ वॉइस आ भैया। रही है? हाँ चलो। हाँ हाँ। पहले अपने आप ठीक को इंट्रोड्यूस करो शिवम। वेट ना एक सेकेंड और। जब इंट्रोड्यूस ठीक। करोगे, जो मैंने कंपनी नेम लिखवाया है ना, अभी के लिए वो कंपनी नेम मत बोलना, ठीक है? अभी उसकी जगह ABC बोल देना, चलेगा वो। ठीक है, क्योंकि मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा ओके ओके भैया। हूँ। अब बोलो। ठीक है। So, good evening, sir. So, my name is Shivam Bhardwaj, and I am working as a QA engineer in AVC company since January 2020. My roles and responsibility includes analysis of requirement, then preparing the test cases and test data, get it verified by the TL, perform test execution, as well as we have to once we find any variation in the code or the system. If we find any variation, then we log the bug in the Jira tool so that it should be easily tracked and fixed, and we should assign to the concerned developer. And I daily take part in the daily Scrum meeting, as well as I take part in the sprint review as well and sprint planning. That's all about my roles and responsibility and me. ओके गॉट इट। ठीक है, प्लीज डिफाइन मी बग लाइफ साइकिल। Okay. So whenever we see the variation in the bug from the expected result, when we see a variation from the expected result, then we lodge a bug. And once that we lodge a bug, then into the Jira tool, then it should be given the name as new. Once that bug is assigned to a concerned developer, then its status changes to the assigned, and when it is accepted by the developer, then the status becomes open, in which he do the validation part. We check whether the bug is valid or not. If that bug is valid, then he will fix he will start fixing, in which the status gets changed to the fixed. Once he fixed, then it will reassign the bug to the concerned tester, then he will test it. If it doesn't find the bug, then he will close it. If we find the bug, then he will again reassign it to the developer back again. And in some case, what happened, the bug is referred. It means that the bug belong from the some other module, or it is a minor bug, which that developer make that status as deferred because the software is about to release, but that is not causing a very much impact. The minor bugs such as UI bug, which can be fixed in coming build, then the status of the bug is given as deferred. ओके, डू यू नो अबाउट बग रिलीज? Bug release. यस। No idea. ओके, बेसिकली समझा देता हूँ मैं। बग रिलीज क्या होता है, अगर आपको याद है मैंने बताया था कि हम लोग रिलीज डॉक्यूमेंट बनाते हैं, है ना? तो जब हम रिलीज हाँ डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, कई बार क्या होता है कि कोई चीजें होती है जो फिक्स नहीं हो चुकी, उस टाइम पे फिक्स नहीं हो चुकी होती, तो एक आध पॉइंट है जो मिस हो जाते हैं, जो फिक्स नहीं हो, पर हमें पता है कि उसमें वो इशू है। तो मुझे एज ए नॉन बग बना के हम लोग उस डॉक्यूमेंट में डाल देते हैं, जिसे बोलते हैं रिलीज डॉक्यूमेंट। और उसको, उस बग को बोलते हैं हम लोग बग रिलीज, क्योंकि हम रिलीज कर रहे हैं उसको भी, उस बग को रिलीज कर रहे हैं, क्लाइंट को बता रहे हैं कि ऑलरेडी ये बग है, जो कि हम नेक्स्ट रिलीज में, नेक्स्ट स्प्रिंट में फिक्स कर देंगे। ठीक है, उसे बोलते हैं बग okay. रिलीज, याद रखना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसके आप मुझे बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग? Okay, so whenever we find a bug and when it get it fixed, so we do the testing on the fixed bug to check to verify that that bug had been fixed or not. So it is done on the failed test cases. That we call it as retesting. Whenever we find a bug or the new builds comes in, then we again do the testing to the those feature which are related to the new feature or the fixed feature. So in that cases, we run all those test cases which are already passed. So this we call it as a regression testing. And example of the retesting is only done when the bug is fixed and it is sent back to the developer to the QA for the verification that bug has been fixed or not. But whenever the
new build, or in case of the bug fix, or if that any change of the code taken place, and whatsoever functionalities are uh, related to the particular change functionalities, then we do the retesting for all those components. Okay, can you And give it me is, the sorry. yeah. Can you give me the example of from your project? Okay, Or it, yes. So example will be like what happened in my project in the transaction module. There is one bug. So the bug is in the status of the payment made already. So we have a eye icon where we can click on the eye icon and see that what is the status of the payment of that particular transaction. So in that, what is happening? It is kept on coming very randomly. It's not that fixed that it is coming at the fixed position. Sometimes is at the second position, or sometimes it is at the third position. So we have to check it, check for the eye icon only, then we call it as that is retesting. But we know that other features which are that when that bug had been when that transaction had been made, who had made the transaction, so that are related to that particular eye icon. So we have to go and check it, those things also, those components also. So that we call it as a regression testing. Or what happened in our project, uh, once that payment in the transaction module, there is one more option is added to make the transaction by cash when coming to the office. So that is had been added. So we have to check all the other components which are related to that transaction module. So that we call it as a regression testing again. okay, great. इसके बाद आप मुझे बताओ, have you written test cases? Yes, yes, I have written test How cases. many test cases you have written? So first of all, sir, the number of test cases that we write in a day, it depends on the complexity of the software. If the software is complex, then in that case I used to write 25 to 30. But if that software is easy, in which that terminologies and the business logic I'm understanding very easily, in that case I can write about 35 to 40 test cases in a day, because we have to go through the requirement, then we have to go through the every what are the specific requirement of each component, and then we have to write the test cases. So in that scenario I used to write 35 to 40. When the complexity is less, when the complexity is very high, then in that scenario I used to write 25 to 30 test cases in a day. Okay, got it. And how many test cases you have executed per day? Okay. So I have the repetition of test cases are also included in that. Yes. Okay, so if we include the repetition, then it will go well beyond 4 to 5,000. But if you specifically ask how many No, test cases, I'm asking about for one day. okay, for a one day, in that day it depends. Like again, it depends the upon the complexity again. First we have to verify if that it's a integration testing, integration related test cases. Then in that scenario I used to execute 10 to 15 test cases. We have to verify each and every step, we have to write the status, then we have to move to the further steps to complete it. But when it comes to the component test cases, or only to the which belongs to the small functionalities, in that case it sometimes it crosses about 45 to 50 test cases in a day, with updating each and everything, past status, logging bug, all those things. Okay. And okay. कुछ टेस्ट केस मुझे बताओ, मैं सिनेरियो आपको दे रहा हूँ, ठीक है? सिनेरियो से अच्छा मुझे याद आया, टेस्ट केस से पहले एक चीज पूछ लेता हूँ मैं आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट सिनेरियो एंड टेस्ट केसेस? So test scenarios are the high level test cases in which we mention what to be tested, and the test cases are those test cases in which we mention how to be tested, what are the procedures we are going to follow to test that particular test scenario. And this is a low level test cases, we call it as in the general terms. Okay. Tell me a test case about lift. Okay, so lift you mean that we use for going up and down, right? Yeah, Not yes, that yes, accelerator. yes. Okay, so the first test cases will be that the lift should stop at every specified floor.
If we have given the input as 1, then it should stop at the first floor only. It should not go to the second or the third floor. Also, if that random input had been given to the floor, to the lift, then it should take it sequentially. Like suppose there is a 4 people in the lift and they have given the random input. So first person given floor 1, second person given that the lift should go to the floor 5, and third person had given that it should go to the floor 3. So the lift should take the input in a sequential manner. It should stop at like first 3, then 5. It's not like that it should stop at the first, since that first input is 1, and then it should go to the 5 because second input is 5, and then again it come back to the 3. So this is not to be followed because it will consume more power, and which is not feasible, and in that scenario it will fail. And the third scenario will be uh, the lift should be equipped with the alarm button and the alarm should be working. uh, the lift at each floor, the lift calling button should be installed and it should be in the working condition. And whenever the load passes, like if that capacity of the lift to contain only 10 people, and if it crosses that way, then lift should give a beep warning. It should indicate that user that it is overloaded, so we should not move. That should be properly working. Okay. Any more test cases you want me to No, explain? no, it's great. Nice. Now, okay. When we stop testing, do you know about it? Yes. We stop testing when the build is not ready. The first, the second thing is that when the budget is over, when we don't have enough time to execute all the test cases, because in that scenario, what will happen? The software will contain will have bug, and it will be it might cause loss to the customer. So in that case, we also stop the testing. And the third, when we stop with when we don't have enough resources to test that particular test that build. And the fifth is that we should stop testing when the test cases are not prepared. ओके। एक चीज आपको याद है, सिर्फ मैंने आपको बताया था उस टाइम पे कि एकदम से इस चीज नहीं बोलनी है, कैसे स्टॉप होता है या कब स्टॉप होता है। पहले हमें बताना पड़ता है कि इट नेवर स्टॉप, होता नहीं है बेसिकली कभी भी स्टॉप, क्योंकि इसमें अपडेट होते रहते हैं चीजों के ऊपर। ठीक है, तो पहले आपको ये पॉइंट Okay. बोलना है कि वैसे होता नहीं जनरली स्टॉप, बट देयर इज सम क्राइटेरिया इन विच वी हैव टू स्टॉप टेस्टिंग, देन उसके बताना है। ठीक है, वो एक लॉजिकल पॉइंट है। Okay. ठीक है, देन मैं आगे मूव करता Okay. हूँ। अब आप मुझे बताओ, हैव यू Mhm. वर्कड इन एजाइल मॉडल? Yes, I have worked in the agile model. This is the very popular model which we are following these days. Okay, so tell me the difference between waterfall and agile model. So, okay, waterfall model is a sequential model. And what if we the changes, the requirement changes, if it comes, then we have in the sequential model, whereas agile model is a not is a sequential model, but also it is overlapping as well. So the requirement changes in the agile model is very well accepted. Whereas if we make the requirement changes in the waterfall model, then it will cause lots of problem. The bug identification in the waterfall model will happen when all the coding parts will completed. But here in the design model, coding part completed, but since the coding part is done on the only chunk of the software, so in order if we get any bug, so we have to make changes in the small part only, not we have to go through the all software. Whereas as in terms of the waterfall model, we have to do the changes in the entire application. That is the third difference. The fourth difference will be the waterfall model is suitable for this smaller software, the software in which modules numbers are less, the features are less. In that, we follow the waterfall model. But in the industries, we are not following the waterfall model very usually these days. Whereas in agile model, uh, it is perfectly suitable for the all types of the application, whether it is a small software or big software. It is perfectly suitable for the all. And also uh, the agile model is cost effective, and also it is very time effective, whereas waterfall model is not that
cost relevant and time relevant. Reason is again the same, because once that whole coding part is done, if that any changes comes in, then if we have to make the all changes in the coding, then we have to retest everything again. So it is not suitable for, it is not that time relevant and the cost relevant. Okay. Tell me, what is sprint retrospective? Okay, so sprint retrospective is opportunity for the tester to test, to analyze what went good, what went bad, and in the previous module, and what thing they should follow to minimize the error they have done in the previous sprint. Okay. Now daily stand-up meeting. Okay, so daily stand-up meeting is a meeting in which uh, all all the people from the scrum will take part, and everyone should give the status of their work, what they have done, what they are going to do, what challenges they are facing, and each of the member will speak for 2 to 3 minutes assigned, and it happens for 15 minutes, 15 to 20 minutes every day. ठीक है. ये भी हो गया. Like, what's your approach to perform testing? Okay, whenever we get a new build, first we do the smoke testing. Once we do the smoke testing to verify that all the critical and the important features are working well. Wait, Once wait, that's wait, wait, wait. सिर्फ हम एकदम से स्मोक से नहीं बताना अपने को, ठीक है? अच्छा याद अच्छा है मैंने आपको बताया था कि हमें रिक्वायरमेंट मिलती है पहले, प्रोसेस वहां से स्टार्ट होता है. अच्छा फिर अच्छा अच्छा हाँ, रिक्वायरमेंट ओके मिला, एस्टिमेशन दिया हम लोगों अच्छा ने. समझ गया हाँ हाँ then we write the test cases, then we हाँ. verify the test वो, cases, then when we get the build then we start right that. यस यस अच्छा यस. ठीक है भैया, मैं फिर से स्टार्ट ठीक करता है हूँ. ठीक है. So the approach of the testing will be, whenever we get a requirement, we analyze the requirement, we start a requirement, we analyze, we see what are the requirement, what are the components in the requirements are written. Then we start preparing the test cases according to our software requirement specification. Once we are done with the software, preparing the test cases, then we do the verification. Then we do the verification of the those test cases. We that once that test cases are finalized, and when we start getting the build, then we do the smoke testing. In that smoke testing, first we check that software which we have got, all the critical and the important features are working or well or not. So once we verify the health of the software, then we move for the further testing, in which we will do component testing first. After doing the component testing, we'll do the integration testing. Once our software is stable enough in the component testing and the integration testing, then we do the system testing at the end. And suppose if there is any bug we have found, and if that build has fixed, then we do the smoke testing again. Then we do the retesting of the software. Once that retesting is done, then we move for the regression testing. So to verify that all the components of which are related to changed feature or the fixed feature are working well or not. So this is the approach that we follow in the industry these days. ओके ठीक है. ये सभी पॉइंट अच्छे, तुम्हारे सारी चीज़ यहाँ से कवर हो चुकी है, मैनुअल की तो हो गई. अब मैं आता हूँ मोबाइल एप्लीकेशन पे. ठीक है, तो मुझे बताओ, व्हाट्स योर अप्रोच टू परफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग? Okay, for performing the mobile testing, again we go through the requirement analysis. Once we are done with the requirement analysis, then we move to the preparation of the test cases. We prepare the test cases according to our software. So some of the differences that is from the web application to the mobile application is that while we are writing the test cases, we include some of the hardware like test cases, like how that battery will behave, how that when we change the network, what is the behavior of the software, that we include. Also we include that screen size when the software is installed in the different screen resolutions, uh, resolution type of the mobiles, then how it will behave. So these are the extra test cases which we include in our test cases. Once we prepare the test cases, then again we move for this smoke testing. Once we do the smoke testing, after again we uh, do the component testing, then we do the integration testing. Once the software is stable enough,
in the smoke testing, in the component testing and the integration testing, then we move for the system testing. ठीक है। मेरे को ये बताओ, सपोज करो तुम्हें टेस्टिंग कर रहे थे मोबाइल एप्लीकेशन पे, मान लो एंड्रॉइड की बिल्ड थी, ठीक है। तुमने एपीके फाइल इंस्टॉल करके उस पर काम कर रहे थे, तुम्हें बग मिला, तुमने सारे बग रिपोर्ट कर दिए, ठीक है। अब उसने एक नई बिल्ड बना के आपको दी हुई है, तो आप क्या करोगे इस केस में? So first we uninstall the previous build, then we reinstall the new हम्म, build, and we see that the screen is splashing or not. If that screen is splashing, then we report it as a bug, and if that is not happening, then we'll again follow the further testing procedure. And while we are installing, we also check that whether the software is installing easily or not in our system. Once we are done with that, then we perform the smoke testing again. Then we do the retesting of the fixed bug. Then we move for the regression testing, and again we do the component. Then we do the system testing, and if that bug is found, then again we lodge the bug in the tool, and then get it fixed. And again, if that is fixed, then again we get the new build. Then we uninstall the previous build and reinstall the new build. That we do. ठीक है, ग्रेट, सही था। इसके बाद मुझे ये बताओ कि अभी लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है एंड्रॉइड का और iOS का? Okay, the latest version of the Android is 13, that is Tiramisu, and for the iOS it is 16. 16.2.2, ठीक है। 16.2. ये पता है आपको कि जो 13 आया है एंड्रॉइड का, या फिर जो iOS का 16 जो वर्जन आया है, प्रीवियस वाले से क्या लेके आया है अपने पास? Okay, previous in terms of what, like लाइक I 13 से पहले 12 था, 12 में ऐसी चीज जो नहीं थी जो 13 में आई है, ठीक है। तभी अपडेट आता है, अपडेट वाला ये होता है कि जो प्रीवियस में नहीं था वो नए में लेके आ रहे हैं ये लोग, ठीक है। इसलिए जो 13 में आया जो 12 में okay, नहीं था। so first of all, there is changes in the UI. Then there is some security patch changes. Uh, uh, Also, not idea, but it like I'm having not that much of the great idea about what are the specific changes that it had bring, because most of the things are related to the security and all, and some of the pre-installed software they started providing also ठीक है। with the changes. बेसिकली एंड्रॉइड 13 में क्या हुआ कि कलर ओएस लेके आया इस बार वो, ठीक है। जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम देखो 13 का पुराने वाले 12 वाले से, तो 12 वाले में कलर्स ऐसा नहीं था जितना भी जो 13 में वो लेके आ रहा है। एक चीज तो ये था, बाकी दो चार चीजें और देख लेना एक बार यूट्यूब से या फिर गूगल से, ठीक है। ठीक है, ठीक ठीक है, सेम ठीक चीज है iOS भाई। के लिए देख लेना। देन ओके इसके बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। और मुझे एक चीज और बताओ कि मैंने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोले थे आपको, अगर याद हो तो, मोबाइल एप्लीकेशन में एमुलेटर एंड सिमुलेटर, हाँ, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमुलेटर एंड सिमुलेटर? ओके, सो एमुलेटर, भैया मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया हूँ थोड़ा इसको, चलो मतलब कोई, जब इसको छोड़ दो फिर अभी के लिए, ठीक है। हम्म। बेसिकली मिमिक करता है ये जो भी सॉफ्टवेयर होता है हमारा, रियल या चीजों मतलब को। इसका कंपोनेंट मुझे याद है, लाइक ये हम्म, मिमिक करता है, एग्जैक्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है इन विच वी इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर वर्चुअली, नॉट इनटू द डिवाइस. So for that we use emulator and simulator. So emulator is like for the supporting the hardware part, and simulator is for the supporting the OS part. That I can guess, but not sure about it. कोई बात नहीं, इसको एक बार देख लेना बस। इसके बाद मुझे ठीक बताओ व्हाट इज रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग? हैव यू परफॉर्म रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग एवर? Uh, no, I haven't performed that responsive testing. Okay, okay. यस। So this is the testing that we do to test that how responsive that our software is. How means once we click, suppose we have touched any button. So in how many milliseconds it is giving the response. So we usually perform that responsive testing to enhance the user experience of the software. And रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग कैसे करते हो आप, थोड़ा सा आइडिया दे सकते हो मेरे को? रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग कैसे करते हैं? हम्म, In the mobile or like in the web application? इन द मोबाइल। रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग मोबाइल एप्लीकेशन में होती है, और क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग होती है वेब एप्लीकेशंस में, ठीक है। Okay, okay. So in mobile we perform the
what we do, first we install, then we'll go into the software, then we'll समझाता हूँ, check. मैं समझाता हूँ। देखो क्या होता है बेसिकली, रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लो कि हमें 2 डिवाइस मिलते हैं कंपनी की तरफ से, ठीक है, एंड्रॉइड के 2, iOS के 2, हमने टेस्ट करके देख लिया सब कुछ सही चल रहा है, बट हम उस पर सेटिस्फाइड नहीं होते कि 2 पे सही चल रहा है तो बाकी से बाकी लोग बाकी उस डिवाइस पे सही चल जाएगा बोल के। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे ना, हमें क्रेडेंशियल मिलते हैं ब्राउजर स्टैक के, ठीक है। तो ब्राउजर स्टैक हो गया, तो ब्राउजर स्टैक के जब क्रेडेंशियल मिले तो हमने उसको उस पर लॉग इन किया, वहां जाके अप्लाई का ऑप्शन होता है, अप्लाई पे जाके हम लोग, वहाँ पे होता है बिल्ड अपलोड करने के लिए, अगर एंड्रॉइड की बिल्ड है डॉट आईपी की हो जाएगी, iOS की बिल्ड है डॉट आईपी हो जाएगी, ठीक है। बिल्ड हमने पे इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे मल्टीपल डिवाइस होते हैं हमारे पास, अगर देखोगे एंड्रॉइड सेक्शन में बहुत से डिवाइस है, iOS सेक्शन में बहुत से डिवाइसेस हैं, तो उन डिवाइस जब आप खोलोगे, ठीक है, जब उसको ओपन करोगे आप, तो वहाँ पे देखोगे आप बहुत सारे जो बने हुए हैं लाइक मोबाइल डिवाइसेस बने हुए हैं, उनके अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उनके अलग अलग स्क्रीन साइजेस हैं, तो वहाँ पे 3 से 4 डिवाइस में एक बार हम उसका फ्लो देख लेते हैं, ये देख ले कहीं पे यूआई तो नहीं बिगड़ी, कहीं पे स्क्रीन अटक तो नहीं रही है, वो हम देख लेते हैं। इससे क्या होता है, हमें एक रिस्पॉन्सिव, हम देख लेंगे रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है एप्लीकेशन का इन सब डिवाइसेस के ऊपर, इसी को बोलते हैं रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग, ठीक है। Okay. चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब मैं आता हूँ डेटाबेस पे, ठीक है। तो Okay, okay. डेटाबेस में आप मुझे बताओ, डेटाबेस कितना बड़ा, पहले बताओ। एसक्यूएल, इफ भैया एसक्यूएल में मैं मतलब सब क्वेरी तक संभाल लूंगा सारा। ठीक है, तो सब क्वेरी संभाल लोगे ना, तो हम्म। प्राइमरी की फॉरेन की यूनिक की पढ़ा है। और मतलब मेरे को रफ आइडिया है दैट प्राइमरी की वी प्रोवाइड व्हाइल वी create a table, so primary key should be null, but it should be unique. नहीं 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 नहीं, छोड़ दो, नहीं तो गलत बता रहे हो, ठीक है। मैं इस पॉइंट पे आता हूँ, मैं मुझे इसके बताओ, अगर मेरे मेरे पास कोई टेबल है, मान लो एम्प्लॉय टेबल है मेरे पास, ठीक है, हाँ हाँ। उन एम्प्लॉय में ना काफी सारे रिकॉर्ड्स ऐसे हैं, मान लो सैलरी ऐसी है जो कि रिपीटेड रिपीटेड सेम सेम आ रही है कुछ लोगों की, ठीक है, और मुझे रिपीटेड नहीं चाहिए, मुझे यूनिक डेटा देख रहे हैं उसमें, यूनिक कैसे है, ठीक है, तो मतलब कैसे चेक करूंगा उसको मैं। For that we use distinct, हम्म like will the syntax will be like select, then we use the distinct, then we give the column name that could be a salary, हम्म then we give the from clause in which we mention the table, and if that any condition are there that that salary should be greater than less than this much, then we'll write the where clause as well. ठीक है, सही है। इसके अलावा मुझे बताओ कि ठीक है, ऑर्डर बाय क्लॉज पढ़ा होगा ना आपने, आई तो हाँ मैंने ऑर्डर करा बाय दिया, पर। ठीक है। हाँ नहीं हाँ तो हाँ। ठीक है, तो मुझे बताओ लाइक जैसे सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है मेरे को एम्प्लॉय टेबल की, सेकंड हम्म छोड़ो, मुझे थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है एम्प्लॉय टेबल की, ठीक है, तो हम्म। कैसे निकालूंगा मैं। Okay, so second hire salary निकालनी है तो first what we'll do, in the select statement we write the salary, in the from clause we write the table from where we are extracting the data, and in the where we provide the any condition if there is, if not then we'll go to the order by clause, and in which we use the order by DESC, which will arrange the salary in the descending order, and then we apply the limit. In the limit will apply that limit starts with the offset and the count. So we'll give the offset as 2 if we have to find the third highest salary, and also we give the count as 1 only. 1. Yeah, तो मुझे that's all. थर्ड हाईएस्ट सैलरी के लिए ना मेरे को क्वेरी बताओ क्या होगी इसकी, एम्प्लॉय टेबल का नाम है, सैलरी कॉलम का नाम है, ठीक है, Mhm. अब बताओ। Okay, so it will be select salary from employee where no not where, order by salary DESC, limit third highest salary। यस यस यस। भेज दिया हूँ मतलब। क्या भेजा है आपने, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी डीएससी लिमिट 2,1 सेमीकोलन, सही है, ठीक है, यहाँ तक भी सही था। अब बताओ एपीआई में क्या पढ़ा है। एपीआई में भी भैया लगभग सब पढ़ लिया, बस रिस्पांस कोड मुझे मतलब थोड़े बहुत याद है, मतलब मैंने उसको अभी मगअप नहीं किया अच्छे से। कोई बात नहीं, 403 पता है क्या होता है। हाँ, इट इज फॉरबिडन। ठीक है, कब होता है ये। जब कुछ यूजर के साइड से रॉन्ग इनपुट होता है इन यूआरएल, और इफ दैट यूआरएल इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, और इफ दैट एपीआई is not properly functioning through the ये user side, it is कई not बार you. ऐसा होता है इसमें बेसिकली ना, कि मान लो आपने जो सब कुछ डेटा सही डाला था, यूजर नेम पासवर्ड, बट आपकी आईडी को अथॉरिटी नहीं थी उस चीज को, सर्विस को यूज करने के लिए, तब वहां पे आता है फॉरबिडन लिख के आता है, फिर इसके बाद जो आपका डेवलपर है या जो भी बंदा हुआ,
वो अलाउ करता है, अप्रूव करता है, देन आप सर्विस को यूज कर सकते हो, ऐसा है। ओके। ठीक है, आप मुझे बताओ क्लाइंट साइड एरर और सर्वर साइड एरर में डिफरेंस क्या है? क्लाइंट साइड, क्लाइंट सर्वर एंड, फिर से एक बार भैया। क्लाइंट साइड एरर एंड सर्वर साइड एरर में डिफरेंस क्या है? Okay, the error which you get into the client side, suppose that if your URL is problem, or if that it is the URL which we have provided in the client side is not actually able to connect with the given API, then we call it as a API side error. But server side error is like error code. We get the error code like 500, 500 series like 501, 502. So these are the error when that server is not responding to the API's query, then those we call it as the server side error. In that we get error in the 500 series, and if there is error in the server side, then we should get a error is 400 or the 300, I guess. यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो। क्लाइंट साइड एरर में क्या होता है, बेसिकली हम लोग सब कुछ जो भी सिंटैक्स है ना, मान लो सिंटैक्स हम हम्म, गलत डाल रहे हैं, हम यूआरएल डाल रहे हाँ, हैं, मेथड गलत डाल दिया, या यूआरएल गलत डाल दिया, बॉडी नहीं दी हम लोगों ने उसके अंदर ना, तो सर्वर हम्म, समझ नहीं पाएगा आप क्या मांग रहे हो उससे। तो क्योंकि हम्म, एबनॉर्मल सिंटैक्स हो गया वहाँ पे वो, है ना, तो उस टाइम पे जो वैलिड हम्म, आउटपुट आना चाहिए वैलिड आउटपुट नहीं आएगा। उस टाइम पे हमारे पास जो स्टेटस कोड आएगा वो 400 से लेके 499 के बीच में कुछ भी हो सकता है। इसी को हम बोलते हैं क्लाइंट साइड एरर। क्लाइंट मतलब हमारा जो पोस्टमैन है वो प्रॉपर हाँ, जो एचटीटीपी के प्रोटोकॉल है उसको फॉलो ही नहीं कर रहा है, उस फॉलो। वजह से, हाँ, उसे क्लाइंट साइड एरर बोलते हैं। सर्वर साइड एरर में क्या होता है बेसिकली, कि हमने डेटा सब कुछ सही डाला है क्लाइंट से, क्लाइंट मतलब हमारा पोस्टमैन, ठीक है, तो हम्म, क्लाइंट से डेटा यूआरएल वगैरह सब कुछ सही डाले, सिंटेक्स सब कुछ सही डाल रहे हैं, सर्वर पे हम्म, गया, वो हिट हुआ, और सर्वर बट ये है कि उस टाइम पे चल नहीं रहा है, ये सर्वर में कोई इशू आ रहा है, ठीक है, ये सर्वर हम्म, अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होता है हम्म, हमारे पास ये इनसफिशिएंट स्टोरेज है सर्वर के अंदर, तो उस टाइम पे वो हमें ना हम्म, एरर दे देगा, स्टेटस कोड दे देगा, जो स्टेटस कोड हमारा होगा बेसिकली 500 से लेके 599 तक स्टेटस कोड हमारा आता है कोई भी सेक्शन में से, उसको हम बोलते हैं हम्म, सर्वर साइड एरर। और जब सर्वर साइड एरर आती है तो उसमें क्या होता है, एड एड कहते हैं उसे, सर्वर एडमिन, 500। हाँ, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर होता है एक बंदा, ठीक है, जो वो जाके हम्म, उस चीज को ठीक करता है, फिर उसके बाद हम फिर सर्वर को दोबारा से यूज कर सकते हैं, ऐसा होता है काम। ओके, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर फिक्स करता है। और भैया अपन इनसफिशिएंट इनसफिशिएंट स्पेस एरर मिलता है। हाँ, और क्या, और कौन सा एरर मिलता है भैया एड हम लोग को? इनसफिशिएंट स्टेज हो गया, इसके बाद इनसफिशिएंट स्टोरेज हो गया, ठीक है, सर्वर नॉट हम्म, अवेलेबल हो गया, और ओके, क्या कहते हैं उसे, इंटरनल सर्वर एरर हो गया, ठीक है, ये सब इश्यूज के अंदर आते हैं। ओके, ओके। बैड गेटवे हो गया, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, अब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ, ये तुम्हारा ये भी ठीक है, थोड़ा सा एपीआई देख लेना, थोड़ा सा एपीआई गड़बड़ कर रहे हो, है ना, हाँ, इसको मैं ये पार्ट मेरा कंप्लीट नहीं था भैया, इसको मैं कर हाँ, लूंगा अभी। वो एपीआई वाला में, लगता है उस वाले डॉक्यूमेंट में होगा जिसमें आपने हाँ, रिव्यू क्वेश्चन डाल रखे हैं। और एपीआई में एक चीज पढ़ लेना, 64 बीट करके कुछ आता है उसमें, मैं भूल गया उस टाइम पे क्वेश्चन को, मैंने लिखा है अपने नोट्स में, ठीक है, हम्म, तो 64 बेस कोड करके कुछ आता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऑथोराइजेशन और ऑथेंटिकेशन में डिफरेंस क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं इंटरव्यू हाँ, में। ये याद है भैया। Authorization means that something is not authorized to access it. That doesn't require any access. That doesn't require any credential to access it, but it is authorized from someone to access it. Whereas authentication means we provide some credential, then we after providing the credential, then those credentials are verified. Once that credentials are right, then we are allowed to do anything into the server or into anything, make the changes, then we are allowed. That we call it as a authentication. Suppose that if we are logging to the any software, then we should provide proper username and the password, then we should click on the login button. The login button will verify that username provided and the password provided is uh, uh, correct or not. Once it is correct, then we are allowed to log in, and then we can make the changes into the software, or we can do the desired. ठीक है, सही है, काफी है आज के लिए, ठीक है, ये वाला पॉइंट, और बस थोड़ा सा एपीआई देख लेना, ठीक है, बाकी सब ठीक है, प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज आपको है ही ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आई होप तुम्हारा हो जाना चाहिए जल्दी से, ठीक है। इसके बाद मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट पे, तो इसके बाद मुझे बताओ किसने प्रिपेयर कर लिया अच्छे से, और शिवम के अलावा। आज की भी भैया खास के तो मैंने एसक्यूएल छोड़ के किया हुआ है प्रिपेयर। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, कहाँ गया, एक सेकेंड, यस, हाँ, आप बोलो, कौन बोल रहा था? अनिमेश। हाँ, निमेश, अब बताओ। एसक्यूएल छोड़ के ऑलमोस्ट सब कर लिया है प्रिपेयर। ठीक है, एसक्यूएल छोड़ के सब प्रिपेयर कर लिया है, ओके, हम्म। एपीआई नहीं आया तुम्हारे में भी, नहीं तुम्हारे में नहीं पढ़ाया मैंने तक एपीआई, ठीक है, तो वो दो चीजें मुझे पूछनी पड़ेंगी,
ठीक है, एक मिनट पहले मैं पॉइंट्स दे देता हूँ शिवम को। शिवम का बेस्ट था 12 ना, ये रहा। इसमें तुम्हारा हो जाना चाहिए, तुम्हारा 8 पॉइंट्स है यार, 8 पॉइंट्स का तो हो जाता है जल्दी। ठीक है, 8 मैंने यहाँ डाल दिया। एक सेकंड और मैं रिकॉर्डिंग वाली स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि मैं ये करूँगा बेसिकली, ये रिकॉर्डिंग जो मैंने अभी बनाई है ठीक है शिवम के साथ, वो मैं अपलोड करूँगा वहाँ पे यूट्यूब में, ठीक है, पब्लिकली, इसलिए कह रहा हूँ। तो ये वाली स्टॉप करके नई वाली रिकॉर्डिंग मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ।